Good afternoon. Can we start? Good afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you so much for taking out time and joining us for this conversation. I am sure all of you appreciate the fact that AMC is a critical part, and now that we are approaching the year end, it becomes even more critical for us to assess how the AMC is looking at. So, thank you so much for joining us. If you could help us understand what is the system that you are currently looking at it and how long you have been using it, that would help us get some idea on what how we can structure the conversation. You can just write down which is the current version that you are using and which is the service pack right now. If you can just drop that in the chat box, that will help us understand what could be the challenges, and we'll try and customize the examples to your requirements. So, Charu, what I am just suggesting, will wait for another 2 to 3 minutes. Sure, My people are just joining. sure. Just another 2 minutes. So exactly 4:10 we will start. I got a couple of messages. Just they are joining. So, can I see the screen? Yeah, sure. Or give me a second. Absolutely fine. So, just give me a second. I think the screen sharing stopped. Just give me a second.
Can you see the screen now? Yes. Yes, let's start. Sure. Yes. So I hope we can start now. Yeah. So Yes. good afternoon, good evening, all. Myself, Sachin, from PTS Systems and Solutions Private Limited. We are, as all of you aware, that we are basically the ERP solution provider, running since last 10 years, implemented so far 100 plus clients. Specifically in the ERP, we providing a solutions, ERP complete consulting, the supports, announcements, integrations related to the SAP, specifically on-demand cloud solutions, cloud services. Being a SAP partner, we provide the SAP Business One services, S/4HANA ECC. Across the industry verticals, we have implemented like dye, tool, engineering, oil, lubricants, packing, FMCG industry. So this is about, in a short, about the PTS. So we have catered more than 100 clients across the verticals. So basically, if you ask me today's session about the AMC, so why it is required and what all are the benefits, and for that to brief and give some insights about it on the same. With me, there is the Charudutta Pande, who is our advisory member, board member with me. So, hi Charu. Hi, Sachin. Hello, So, everyone. can we just start and go ahead with the exactly why it is required and what exactly the importance of the AMC? Who all are running the SAP in Okay. their So organization? sure. So let me start by asking everyone a very simple question. How many of you are very comfortable cutting the AMC check whenever SAP asks you to pay that money? So I would like to get your answers in the chat box. The chat box is pretty much open, and I look forward to understanding from you. How many of you are very excited when there is an SAP invoice coming in for the amount of money, or any particular partner coming in and telling you that this is the maintenance amount that you need to pay? Do you get excited when this particular part comes in, or this point in time you feel that kare aa gaya kharcha? So everybody, you are comfortable, or you like, what's your part? So how many of you get excited with this, right? Not many of us, right? So we always keep on believing whether I really need to pay this particular money, not need pay this money. What do I really need to do? Is it must for us to make that payment, or what can? Is there some other way for me to get a better traction on this? So what we are going to do today is that we are going to walk through a process of understanding if there is a way for us to get maximum value of this particular out of our investment in the AMC part, and how can we really go and establish what exactly is the value that I'm going to get from this. So I'm going to start with 5 fundamental questions on how we are going to do that. Okay, and these fundamental questions start with the first part as to why do we need the AMC. So look at the work that Sachin is doing, and you have seen this particular part. So let me start by getting into the very fundamental question of understanding why do we actually need a AMC. This is the agenda. Why do we need that? Where can we actually get this support? What should we be doing? How we can do that, and when we should go. And then I'll walk you through a process कि हमको कहाँ से और कैसे AMC लेना चाहिए. So the first part कि AMC लेना क्यों है. पहला जो पार्ट है AMC का इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड क्योंकि आप अपनी रिस्क मिटिगेट करेंगे. हम जब भी फाइनेंशियल ऑडिट या आप किस तरह ऑडिट फेस करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ कैन मिटिगेट आवर रिस्क, क्योंकि रिस्क तो होगी.
The only thing that we can do around is that we can mitigate. The first thing that you do when you are taking an AMC, आप अपना फाइनेंशियल रिस्क कवर कर रहे हैं. कैसे कवर होगा? फाइनेंशियल रिस्क क्यों है? अगर आपकी सिस्टम नहीं चल रही है, किस टाइम पे आपका बिलिंग रुक गया और आपका रेवेन्यू लॉस हो गया. फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च का आपका बिलिंग है, आपका सिस्टम डाउन हो गया, आप उस टाइम पे बुक नहीं कर पाए, आप इनवॉइसेस जनरेट करके आपके ईवे बिल नहीं बन पाए, देयर विल बी एन इशू फॉर यू टू रिकॉग्नाइज दैट रेवेन्यू. ये हर मंथ एंड पे इशू होगा, हर क्वार्टर एंड पे आपके इशू होगा अगर आपके पास सिस्टम नहीं है. दूसरा पार्ट है कि अगर आप उसके साथ वो आपका रेवेन्यू नहीं बुक हो पा रहा है, तो आप उसके साथ प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाओगे. तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप हमेशा एक सिस्टम रखें जो आपको रेगुलरली आउटपुट रहे, आपका सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है. अगर कुछ भी किसी तरीके का कोई इश्यू आता है तो आपको सपोर्ट मिले. इसीलिए आपके लिए मेंटेनेंस होना जरूरी है. सेकंड पार्ट है आपका ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? जैसे आउटपुट है, आप देखना चाहते हो कि मेरे सिस्टम में से कितना काम आ रहा है, मेरा प्रोडक्शन उतना हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा जितना मटेरियल सही चाहिए उतना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, मेरा पेमेंट कलेक्शन टाइम पे आ रहा है नहीं पा रहा है. ये सारी चीजें आपको आज एक रिपोर्ट के माध्यम से मिल रही है. जिसमें आप रिपोर्ट रन करोगे आपको पूरा दिखता है, मेरा रिसीवेबल कितना है, मेरा पेएबल कितना है, मेरा पेमेंट साइकिल कैसे चला है, मेरा आज का आउटपुट कितना है, एफिशिएंसी कितना है. ये सारी चीजें आप सिस्टम से देख पाते हो. अगर यही चीजें आप उसकी बजाय मैन्युअली करने जाओ तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, शायद उतनी एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाएगी, और वो एफर्ट के बाद आपको 1 या 2 दिन बाद मिलेगा, जब तक आप ऑलरेडी आपके 2 दिन उस प्रोसेस में लॉस हो गए. तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए अपनी सिस्टम रेगुलरली चालू रखें. तो थर्ड और सबसे बड़ा पार्ट आज के डेट में वो है कस्टमर एक्सपीरियंस. देखिए अभी जैसे पूरी इंस्टाग्राम और रील की दुनिया है, यहाँ पे लोगों को 30 सेकंड या 59 सेकंड का वीडियो भी नहीं देखना है. थोड़ा अगर कहीं हो गया तो लोग 5-6 सेकंड देख के उस रील को आगे मूव कर देते हैं. तो इस पॉइंट में अगर सिचुएशन है कि आप कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वो आपके यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, या वो कोई चीज आपसे से खरीदना चाहता है बट फाइनली इनवॉइस नहीं हुआ, आपको उसको पेमेंट रिफंड किया, वो इमीडिएटली दूसरी जगह जाके सेम चीज खरीद लेता है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एक रेगुलर एक एक्सपीरियंस दे, वो कस्टमर डिलाइट आप अचीव करें. इसलिए जरूरी है कि आपकी सिस्टम हमेशा चलती रहे, और वो चलने के लिए वो हमेशा मेंटेनेंस में रहे. दूसरा इसका पार्ट है रेगुलेटरी पार्ट. जैसे कि आपका आपने एक इनवॉइस जनरेट किया, आप उसके लिए ईवे बिल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका पूरा प्रोसेस सीमलेस होना चाहिए. कहीं पे ऐसा ना हो कि आप कहीं आपका एक इनवॉइस एक टाइप में दिखे, दूसरा इनवॉइस दूसरे टाइप में दिखे. ये सारी चीजों में लोगों को डाउट आना शुरू होता है, और यहाँ से आपके लिए रेगुलेटरी चीजें सारे कंप्लायंसेस और सारी गड़बड़ शुरू होती है. तो जरूरी है कि फंडामेंटल तीनों रिस्क, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और रेपुटेशनल रिस्क, तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी सिस्टम मेंटेनेंस में रखें. ये हो गया पहला पार्ट. भाई छोटी देखिए कि बेसिकली हमको करना क्या है. हम सोचते रहे कि नहीं करना है. अभी देखिए सोसाइटी का एक मेंटेनेंस है, आपका गाड़ी का, आपका व्हीकल आपको मेंटेनेंस करना है, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना है, प्लान का इंश्योरेंस निकालना है, सारी चीजें आप तो बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं. बट द मोमेंट ये आईटी में आता है आपको लगता है कि नहीं गया तो क्या होगा. अगर नहीं होगा तो किसी को सपोर्ट के लिए बुला लेंगे, अगर प्रॉब्लम आता है तो हार्डवेयर वाला बंदा है वो आके लेकर जाएगा, अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो रही तो किसी को बुला के वहां से करवा लेंगे. सॉफ्टवेयर का क्या है, वो तो मुझे देना पड़ता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलता है. ये सारी चीजों के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं बाकी रेगुलेटरी पार्ट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को निग्लेक्ट कर जाते हैं. तो हम क्यों नहीं करें, हम क्यों ये देखें कि सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है. आज अगर हम बिलिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, हमारे रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इवन हमारा क्लाइंट भी हमको जीएसटी पे करने के लिए प्रॉब्लम होती है. So that is why it is very important for us to ensure that our system is always under maintenance. And इसका दूसरा पार्ट भी है, some small services, जैसे आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, this is something you should always have. But the question is, how do I go and assess कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है. ठीक? तो तभी हम इसके ऊपर आते हैं. ठीक है कि अगर मुझे देखना है ना कि मुझे सही में करना है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है. आप दो चीजों के ऊपर अपना वर्किंग चालू कर सकते हैं. पहला पार्ट है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या है, और सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल रिस्क क्या है. फाइनेंशियल रिस्क आपका हो गया कि जहां से आपका सिस्टम का बिलिंग रुक गया, आपका रियलाइजेशन रुक गया. अगर कहीं ऐसी पार्टी की कोई सिस्टम रुक गई तो आपका पूरा काम रुक जाएगा, मटेरियल बाहर निकलेगा ही नहीं, प्रोडक्शन कंफर्मेशन होगा ही नहीं, बिलिंग ही नहीं निकलेगा. तो ये पूरा जो आपका अगर अल्टीमेटली आप रेवेन्यू नहीं रियलाइज कर पा रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क है. दैट इज वन. सेकंड पार्ट इज आपका टेक्निकल रिस्क. आपने कहा कि मैं सिस्टम मेंटेनेंस भी नहीं रखता हूँ, एक लेवल पे जाके वो सिस्टम का पूरा मेंटेनेंस का पीरियड खत्म हो गया, फिर आपको अपग्रेड करना है, उस टाइम पे वो बोलेगा
अगर आप एसएपी के साथ कर रहे हो तो आप जितना भी पीरियड नहीं पे करोगे, जब आप मेंटेनेंस दोबारा चालू करना चाहोगे आपको पूरे पीरियड के लिए मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और उस टाइम पे अगर वो पैच वो लेवल अपग्रेड पूरा खत्म हो गया, उसमें से नया वर्जन आ गया, आपने सपोर्ट नहीं किया है, तो आपको किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपका सिस्टम पूरा एब्सोल्यूट होकर रुक जाएगा। आपको किसी न किसी से बुला के उसको मेंटेन करवाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा, रिस्क भी बढ़ती रहेगी, और वो सिस्टम कभी करंट लेवल पे नहीं चलेगा। इसीलिए आपको दोनों चीजें देखनी चाहिए कि मेरा उसमें टेक्निकल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। अभी जब हम ये देखते हैं, दूसरा पार्ट हमको देखते हैं कि मुझे स्कोप क्या चाहिए। ये एक बहुत जरूरी पार्ट है कि मुझे कितने देर में सपोर्ट चाहिए, क्या मुझे इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, या 1 घंटे में सपोर्ट आए तो चल सकता है, या मेरी सिचुएशन है कि अगर मेरा मंथ एंड है तो मेरे को 5 मिनट में फोन पे ही सपोर्ट चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता, मेरा काम ही नहीं रुक पाएगा। दूसरी पार्ट, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके पास किन चीजों के लिए टेक्निकल रिसोर्स अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा है, एसएपी का एक बेसिस मैनेज करने वाला, रिसोर्स लाइसेंसिंग मैनेज करने वाला बंदा है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल वाइज ही सपोर्ट लगे। तो आप देख सकते हैं कि आप क्या सपोर्ट देना चाहते हैं। थर्ड चीज आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको कितने पीरियडिकली सपोर्ट लगता है, कि आपको हर महीने में सपोर्ट लग रहा है, हर 2 दिन में सपोर्ट लग रहा है, या ऐसी नई टीम आई हुई है जिनको रोज कोई ना कोई क्वेरी आ रही है। उनके लिए क्वेरी है, वो कंटिन्यूअसली सीनियर्स को परेशान करते हैं। अगर सीनियर्स को परेशान नहीं करे तो कुछ उल्टा सीधा सिस्टम में कर रहे हैं, जहां से आपको रेगुलर सपोर्ट की जरूरत है, ये आपको पता चलेगा। ये बात आपको लेकर जाएगी कि आपको इसमें क्या एफर्ट्स लगेंगे, एंड देन यू कैन लुक एट कि इसका कमर्शियल क्या है। मेरे साथ जो पार्टनर के साथ जो मेरा प्रपोजल आया है, जो जिसने मुझे प्रपोजल दिया है, वो क्या मांग रहा है कंपेयर टू दैट, मेरा अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरे रिसोर्सेज क्या जाने, इसका आप कंपेरेटिव कर सकते हैं। अभी इसका एक छोटा सा प्रोसेस देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली 3 चीजों को देखिए। पहला पार्ट हो गया कि आपने आपकी नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, आपकी रिक्वायरमेंट्स लिख ली, फिर आप यूजुअली पार्टनर्स के पास जाते हैं, उनसे प्रपोजल्स देते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, निगोशिएशन होता है, और आप फिर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चलता है। अभी सवाल ये आता है कि ये प्रोसेस ठीक है, बट मुझे कब करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये सभी हर टाइम पे आपका सिस्टम हमेशा मेंटेनेंस में होना चाहिए। रीजन क्यों बताता हूँ। अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका फोकस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपना काम करने के लिए होना चाहिए। सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके हार्डवेयर चल रहा है नहीं चल रहा है, यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आप बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा पाओगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपके जब बिजनेस शुरू हो रहा है तब आप अपने बिजनेस पे फोकस करें, और बाकी सारी चीजें जो है वो जो आपका टेक्निकल पार्टनर है उसके साथ छोड़ दें। जब आप ग्रो हो रहे हो उस टाइम पे आपके यहाँ नए लोग आएंगे, नई टीम बढ़ती रहेगी, और इन लोगों को आपको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि ग्रोथ स्टेज पे आप मेंटेनेंस रखें। जब आप स्टेबल हो तो भी आपका सिस्टम का जो सपोर्ट पार्ट है आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट आपके पास सपोर्ट चाहिए तो इंश्योर दैट जिस तरीके से चीजें चल रही है वो चलती रहे। और जब आपके पास चैलेंज है, आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, उस टाइम पे भी आप एक बेसिक सपोर्ट लेके रखिए, ताकि जब भी आपको इश्यू आए आप बात करके उनसे सपोर्ट ले पाए। हो सकता है कि आप फुल टाइम सपोर्ट ना लें, आप ऑन कॉल सपोर्ट लें, लिमिटेड पीरियड के लिए सपोर्ट लें, बट आपका एंगेजमेंट होना चाहिए ताकि आप उस सपोर्ट पार्टनर के साथ बात कर पाए। जब आप नया सिस्टम ले रहे हैं उस टाइम पे आपके पास एक रेगुलर कुछ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आएगा। आप ये देखिए कि उसी टाइम पे आप कितना मेंटेनेंस वारंटी ले सकते हैं, कितना सपोर्ट पीरियड ले सकते हैं, ताकि आपके पास वो सिस्टम आपको पूरा पेबैक मिलने तक आपके पास सपोर्ट मिलता रहे। जब आप रिन्यूअल कर रहे हो उस टाइम पे भी आप देखें कि आप कोई ब्रेक ना रहे, क्योंकि उस बीच में जो सारी एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ से काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं। थर्ड पार्ट दैट इज कि जब आप मेंटेनेंस में आते हैं तो काफी सारी कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट बीच वाले पीरियड के लिए भी पे करने के लिए बोलेगी, या तो फिर इन सारी चीजों में जो कुछ भी डैमेज होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इन दोनों चीजों में लॉस आप ही करें, तो इसलिए जरूरी है कि आप किसी न किसी तरीके से एक बेस लेवल में मेंटेनेंस में रहें। कि होने के बाद फाइनेंशियली जब आप देखें, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए भी आपके पास कवर चाहिए, रिस्क मिटिगेशन चाहिए, वो भी आपको मेंटेनेंस चाहेगा। जब आप ब्रेक इवन कर रहे हो तभी भी आप मेंटेनेंस लेकर चले, ताकि आप ये देखें कि आप कभी लॉस भी नहीं जा रहे। प्रॉफिटेबल है उस टाइम पे तो जरूरी है कि आप जिन चीजों पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे फोकस करें, और बाकी सारी चीजें आप आउटसोर्स करें, मेंटेनेंस में रखें। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग
कीप दैट एंगेजमेंट गोइंग। वो एंगेजमेंट रहेगी तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ, जो आप अपने कंपनी में किसी तरीके से भी आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये बेसिक असेसमेंट प्रोसेस है, जहां से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपको किस टाइप का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, कितना वैल्यू का लगेगा, किस वैल्यू तक आप मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। पहली चीज एक सिंपल आप कर सकते हैं। आपके पास जितने सारे इक्विपमेंट है, वो प्रिंट लैपटॉप से लेके सर्वर प्रिंटर तक, जो कुछ भी आपके पास सारे डिवाइसेस है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। आपके पास जितने सारे सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक लिस्ट बना लीजिए क्या है तो, एंड डिफाइन कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स क्या है। तो ये जो तीनों पैरामीटर है कि आपके इक्विपमेंट, आपके पास जो लाइसेंसेस है वो, और आपका यूजर्स, ये तीनों एक सबके साथ मैप करके आपको क्लियर बताएगा कि जरूरत, मेरे पास बेस लाइन क्या है, मुझे ओवरऑल स्कोप कितना है। अभी आप दूसरी चीज इसमें देख सकते हैं कि आपके पास इन चीजों के लिए अब तक कितने टिकट रेज हुए हैं। अगर आपके पास आज के डेट में मेंटेनेंस है और आपके लोग अगर रेगुलरली सपोर्ट मांगते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि बेसिकली मुझे नंबर ऑफ टिकट्स कितने चाहिए, कि किस टाइप के टिकट आ रहे हैं। काफी बार क्या होता है कि लोग कुछ ऑपरेशन चीजों के लिए भी सपोर्ट है तो फोन कर लेते हैं, वो अपने बाजू वाले से बात नहीं करता, सीधा सपोर्ट वाले को बात करता है, सपोर्ट वाला टिकट डाल देता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरे पास जो टिकट्स है, वो सिर्फ यूजर के उसके ऑपरेशनल क्वेरी के लिए थे, या सही टेक्निकल चीजों के लिए थे। और फिर आप देखिए कि ये सारे क्वेरी सॉल्व करने के लिए जो पार्टनर है वो कितना टाइम ले रहे हैं। ये वर्किंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर मुझे किस टाइप का सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे सिर्फ ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए, तो हो सकता है कि मैं अपने सीनियर्स को ये असाइन करूँ कि भाई देखिए, आप इन चारों चीजों के लिए, इन चार बंदों के लिए जो नया है, उनको सारी जितनी चीजें ऑपरेशनल है आप समझाइए। टेक्निकल पार्ट है तो ही वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा। ऑपरेशनल पार्ट आपका सारा इंटरनली होना चाहिए। आप एक प्रोसेस सेट कर सकते हैं। ये होने के बाद आप एक ना स्कोप डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकते हैं कि ये इतने सारे मेरे पास इक्विपमेंट है, इतने सारे सर्वर्स है, इतने सारे प्रिंटर्स है, इतने डेस्कटॉप है, इतने लैपटॉप है, इतनी सारी एक्सेसरीज है मेरे पास। इन सारी चीजों को मुझे इस तरीके से मेंटेन करना है कि मेरा डेली बैकअप होना चाहिए मेरे को, और ये देखना चाहिए कि मेरा सिस्टम हमेशा रनिंग रहे, मेरा अपटाइम एक स्पेसिफाइड चाहिए मुझे। ये चार मेरे लोकेशन से यहाँ से मुझे रेगुलरली कनेक्टिविटी आनी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मेरे यूजर्स को हर महीने एक ना एक इस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है तो उनको इस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने आप देख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि सारा जो बंदा मुझे देने की तैयार है, मैं उनको इतने अमाउंट तक पे कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप ये सेम डॉक्यूमेंट अपने यूजर्स को दे सकते हैं कि देखिए, आपने कहा था कि प्रोक्योरमेंट में मुझे इतना प्रॉब्लम है, एक बंदा आपको प्रोक्योरमेंट में इन सारी चीजों को करने के लिए लगेगा, उसकी इतनी कॉस्ट आएगी, आप कंफर्म कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपका यूजर है वो सही में जो एक्चुअल जरूरी है उसी के लिए डाल रहा है, या सिर्फ अपना विश लिस्ट डाल रहा है। आप उस चीज को वहीं पे रोक के जो एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट है उसका साइन ऑफ ले सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये बंदा आएगा, इसकी इतनी कॉस्ट होगी, ये जो पूरी कॉस्ट है मैं आपके डिपार्टमेंट को, आपके कॉस्ट सेंटर को अलोकेट करूंगा। ये पूरा करने के बाद आपके पास एग्जैक्टली पूरा एक्सेप्टेड साइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आएगा कि हम सबकी रिक्वायरमेंट यही है कि इतना आप हमको एम्स में लिख कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये बात आती है, फिर आप प्रपोजल ले सकते हैं, फिर नॉर्मल प्रपोजल होगा। प्रपोजल में आपको क्या देखना है? प्रपोजल में सबसे पहली बात जो होती है इंपॉर्टेंट, कि इसका पीरियड क्या है। आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बेसिकली, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि मुझे बेसिकली 12 महीने के लिए पीरियड दे, तो आप मेंटेनेंस दीजिए। बट जो सॉफ्टवेयर ओईएम से वो आपसे कहेंगे कि नहीं, जब से आपने स्टॉप किया था तब से अब तक जितने सारे पैचेस आए वो उसके लिए भी हमने सब कस्टमर को चार्ज किया, आपको पे करना पड़ेगा। यू विल नीड टू पे फॉर द कंप्लीट पीरियड। आप आज बोलोगे तो कल से लेके एक साल तक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका सपोर्ट पिछले साल 31 मार्च को खत्म हो गया है, तो आपको वहीं से पे करना पड़ेगा। तो आपको एक पीरियड देखना पड़ेगा किस चीज के लिए वो कर रहे हैं। सेकेंडली, उसका स्कोप क्या है, इसमें से सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, पैचेस है, आपका सिस्टम ऑडिट है, क्या चीजों के लिए आपका पार्टनर कमिट कर रहे हैं, क्या चीजों के लिए आपको कोई एसएपी या और कोई पार्टनर कमिट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं उसमें। फिर ये सपोर्ट टाइप क्या होगा, आप उनको रिमोट सपोर्ट करेंगे, ऑन द फोन सपोर्ट करेंगे, आपको ऑन साइट सपोर्ट मिलेगा, इसमें से कौन सा सपोर्ट किस टाइम के लिए कितने पीरियड के लिए मिलेगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। किस टाइप का रिसोर्स आपके लिए अलॉकेट होगा और वो कितना एफर्ट डालेगा,
वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखिए कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, मेरा कौन सा इश्यू आप कितने टाइम में सॉल्व करके दे सकते हैं। जो मेरा बिजनेस क्रिटिकल है, मुझे इमीडिएट चाहिए, वो थोड़ा क्रिटिकल है, वो आप मुझे 24 घंटे भी करके दो तो भी चलेगा। मुझे कोई एनहांसमेंट चाहिए जिसके लिए मुझे आज नहीं चाहिए बट मुझे चाहिए, तो आप मुझे एक हफ्ते भर में दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी चीजें आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में जरूरी है कि आप सिर्फ मेंटेनेंस का जो वैल्यू है वो देखें। फिर उसके साथ आप देखें कि आपका ट्रैवल एंड लॉजिंग का पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ट्रैवल एंड बोर्डिंग की कॉस्ट क्या है, बाकी सारे एक्सपेंसेस कैसे हैं, वो सारी चीजों को देख के आपको एक पूरा ओवरऑल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। देन देयर आर टू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्रिटिकल। इसमें से एक काफी बार जाता है कि दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट एक्सक्लूडेड। कि आपने तो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ चीजें वो देख लेंगे, बट होता ऐसे है कि वो कह रहे कि नहीं भाई, ये 10 चीजें हम नहीं देखेंगे। अगर आपने इस पीरियड के बीच में कुछ आया है और इस पीरियड के बीच का कोई पैच है, तो उसका प्रॉब्लम हम आपके लिए सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज आप पर्टिकुलर उस पीरियड में मेंटेनेंस में थी नहीं। तो ये सारे एक्सपीरियंस समझना बहुत जरूरी है। एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस बंदे के साथ आप काम करें वो पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन करके देने वाला आदमी चाहिए। क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पार्टनर से दूसरे पार्टनर के पास जाओगे, या किसी भी टाइम में आज के जो लोग हैं वो चेंज होकर नया टीम आएगा, उनको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट ट्रेसेबिलिटी दिखना चाहिए कि हमने एक पर्टिकुलर चेंज किस लिए किया था, किसने वो चेंज स्पॉन्सर किया था, किस कारण से वो चेंज स्पॉन्सर हुआ था, फिर वो एक्चुअली एग्जीक्यूट किसने किया, क्या टाइप से एग्जीक्यूट हुआ, उसके लिए क्या चेंजेस हुए, और फाइनली अल्टीमेटली उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको क्लियरली देखनी चाहिए। और इसके लिए आपको देखना चाहिए कि जो प्रपोजल आ रहा है वो इन सारी चीजों को कवर कर रहा है ना। ये जब चीजें आप देखते हैं एंड व्हेन यू वांट टू लुक एट हु शुड बी योर सर्विस प्रोवाइडर, ओके, इसमें तीन पार्टनर्स, तीन एस्पेक्ट से आप चीजों को देख सकते हैं। फर्स्ट, इट्स प्योरली ह्यूमन एस्पेक्ट। ठीक है, उनके पास टीम है, ठीक है, टीम के पास कितने स्किल है, ठीक है, वो ठीक ठाक स्किल है, और आपके इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं, अगर आप ऑटोमोटिव में है तो क्या वो ऑटोमोटिव जानते हैं, क्या वो सर्विसेज जानते हैं, फिनटेक जानते हैं। तो आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, ये आपको समझना जरूरी है फॉर दैट पर्टिकुलर टीम। फिर आता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो उन्होंने कितना कोट किया है, क्या पेमेंट टर्म्स है, हो सकता है कि दोनों के पेमेंट टर्म्स सिमिलर हो, एक बंदे को एडवांस चाहिए, एक बंदा आपको 60 डेज क्रेडिट दे रहा हो, तो आपके लिए वो एक ओवरऑल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट इज डिलीवरेबल्स। क्या डिलीवरेबल के अगेंस्ट मुझे कितना बिलिंग करना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक EHP अपग्रेड भी आएगा, एक मुझे पेमेंट टर्म अपग्रेड भी आएगा, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भी अपग्रेड आएगा, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है फॉर यू टू बेसिकली सी हाउ डू यू क्वांटिफाई दैट होल थिंग इन टर्म्स ऑफ finance. And then the final part, which is very critical, is about the organizational side. एंड यहाँ पे ना आज के डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लोग जो फॉर्मली एसएपी पार्टनर्स हैं नहीं है, जिनका स्टेटस अननोन है, वो भी काफी जगह जाके कोट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स। नाउ व्हाट दे डू इज दैट वो किसी के साथ जाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, फिर वहां से किसी और पार्टनर के साथ करेंगे, फिर वो एसएपी के साथ जाएगा। ये पूरी चेन ऑफ कमांड में एक जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज भी ऐड हो रहा है, पूरी ऑथेंटिसिटी भी लूज हो रही है, और पूरा उसका विजिबिलिटी भी लूज हो रही है। तो ये जरूरी है कि जब आप किसके साथ मेंटेनेंस साइन करें, तो ये जो बंदा या जो पर्टिकुलर टीम है जिनके साथ आप साइन कर रहे हैं, वो उस कंपनी के ऑथराइज पार्टनर्स हो। दूसरी बात, जो उनकी लीडरशिप है वो क्या सोचती है। क्या उनकी लीडरशिप ये सोचते हैं कि मुझे सपोर्ट में बिल्ड करके मुझे कुछ आगे लेके जाना है, मुझे पूरा कस्टमर बेस पकड़ के रखना है, या उनका लीडरशिप ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा प्रोजेक्ट करूं मैं आगे लेकर जाऊं, मुझे चाहिए सपोर्ट, छोड़ दो, जिसको लेना है वो ले लो। दोनों चीजें, दोनों पर्सपेक्टिव है, अपने अपने पर्सपेक्टिव है, राइट। पर उनकी लीडरशिप क्या सोचती है। आपके हिसाब से फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, यू शुड बी एबल टू वर्क विद समबडी हु इज विलिंग टू वर्क विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड लाइक टू ग्रो विद यू। जरूरी है कि आप बेसिकली देखें। एंड द फाइनल बिट इज दैट यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम द मार्केट टू अंडरस्टैंड what these people are doing, what is their support, what has been their reputation, how they have worked with different people, and what has happened. So this was the overview that I wanted to give you about how you can go about the AMC contract. What are the points that you would like to share? What can happen and how things would move? If you have any kind of questions at this point in time, we can discuss them now. Any questions here?
All, if you have any query questions on so far. Hello, Charudutta. Yeah. Hello. Hello, Charudutta. Yes. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yes. Hello. Can't Yes, hear. we can hear you. Yeah. Now we can't hear them. Hello. Yes. Yes. Charudutta, I have one question. Yeah. So, the importance, I mean, what we want to do, I have a few users with me, and Yeah. we want to ensure that there should be a proper governance, I mean, how the partner we are working with, how that partner is, supporting us on SAP or any other ERP. So, how that effective governance model should be designed. Uh, so that there is a constant update that is provided to us and senior management, so that the any given moment we are completely in understanding what is happening on the support. Sign typically the large contracts, it is very important for you to put that governance structure in place and to ensure that everybody has a complete transparency. Now there are different methodologies that are followed across by different service providers and companies, but there are some fundamentals that we can work on. So the first part that we need to work on is it can start from looking at what is the support objective, why we are basically, when you do a proper detailed contract, it will start basically looking at what is the objective with which we are entering into this particular agreement, what is the scope that we have defined, and for this particular scope there will be various departments. It will be spread across various departments, various teams, and for there would be specific stakeholders who are involved in each of those departments. So we can create a comprehensive matrix that defines what are the specific activities that are planned for that particular department, what is expected to happen, what is the support expected from the partner to get those activities, what is the action plan that the partner has agreed to undertake those particular activities. And based on that particular part, then we can regularly have a review meeting every month to see Okay. what is the progress on all those particular parameters, and then that the progress that gets reviewed based on each of the department or each of the specialists per se can then subsequently be reviewed at the quarterly review meeting that can happen between the management or the leadership in both the organization. So this is one form of a structure that can go. There can also be a very simpler structure which can exist for not so large engagements, wherein there is a very, when you start any particular maintenance contract and when you plan it for a year, you can simply create a 12-month calendar looking at what are the activities that you are expected to do throughout the year. What are the These could be the activities wherein you have planned, say, if you ask say 100 or 500 hours, and these are the activities that need to happen throughout the year. So these are the planned set of activities that you do. Then you categorize the second one, which are going to be purely the emergency or the tickets that get raised based on whatever the work that is, whatever the queries that the users may have, and all of them can then be reviewed every month to see what is the progress of planned activities and what is happening on the tickets that are coming in. Now, review of tickets usually give a lot of insights, particularly in terms of new users coming in or a specific set of users reaching out for one particular part. Or in certain cases, there could be some change in market demand which is not directly configured in the system today. That is making a lot these people come up with different queries. So it may, in certain cases, make sense to do a small enhancement in that particular portion for us to take care of those requirements permanently. So these are the queries that can. So these are the
kind of inferences that we can draw based on the periodic review meetings. Okay, thanks, Charudutta. I think another way is also to define some SLAs and request your partner to publish those metrics. And based on that, if those reviews can happen, I think that again would be a good approach to control. I completely agree with you. SLAs also play a very critical part. The maturity of both the organizations would at that point in time decide what is it that how those SLAs can properly be defined and how they can be adhered to and how they can be monitored periodically for them to get the right output. Thanks, Charu. Sure. Okay, now there is another question coming in, which is in terms of the trickiest part around this part, which is what if we need to do the customization. I think I missed out one particular slide here, which could have brought this thing out. Okay, so now whenever you are signing the support contract, that point in time, the support contract can be done on 3 different parameters. The first parameter is that you can say, I'm going to raise specific number of tickets with you, and for those tickets, you define how much time it would take, and accordingly, we decide that okay, so we have that you will be supporting us for say 100 tickets that will typically take. So purely when is the 100 tickets, some particular amount per ticket. That is one model. The second model is that we say okay, we are going to come to you with some specific requirement at one point in time, and we agree on the rates right now. You tell us what is the manpower per man day or the overall man days that you would need, particularly to get that activities done. Those many number of days multiplied by the rate that we have agreed right now is the cost that we are going to pay you. The third state is wherein companies said, okay, we are going to at this point in time say buy 100 man days or say 500 man days of effort from you, and then we'll keep on telling you what is the work that has to happen, and it needs to happen within that particular period, or you give us an estimate and you keep on consuming from that particular period. So based on the kind of agreement that you have done with one particular service provider, your ultimate output will change. Now, typically when it comes to the SaaS products, or if you're on the subscription part, usually the scope that you can do or the changes that you can do are more to the configuration at one particular point till only a particular point in time, right? So there would be far more standardized version that you would operate. However, in case of the on-premise installations that you have, there's a lot of possibility of doing customization. In certain cases, when the contracts are defined, the customization is kept separate. Only the maintenance contract covers the basic support requirement, and you want to specify what is going to be the per day charge for the customization that may be required. So the client sends the customization request to the partner. Partner does the overall effort working, gives it back to the client. The client approves that particular working. Then accordingly, the customization is done, and based on this particular part, the amount is charged to the client. Now that we have done this particular part, now I would request Sachin to help us with some very specific examples of how things can be done, and what are his experiences of working with various companies on their support part. Okay. So thank you, Charu. So there are the few clients in our last 10 years which has been approached PTS in terms of SAP तो ले लिया, लेकिन implement हुआ है, but we are not able to use it and we are not getting 100% return on whatever we invested the money. And it's something like typically when it comes to the SAP, each and every most of that is the one layman phrase is there. It's like SAP is the white elephant. So whenever we take, by default, we will have to just pay without getting any returns. So let me tell you, there is a couple of cases, live cases. One of the just on the screen, one of it.
That is the basically they are into the typically the plastic manufacturing, which they have taken the SAP in 2015, implemented by the one of the partner. They have a three different locations, and 3 years implementation has been done. But other than invoicing, nothing was happening. So complete production, then the typically the material requirement planning, procurement, and so many things were just configured, but which is not were in use. So when we approached and we started, so we clearly given them the uh, uh, clarity that you are using. It's something like they were using the SAP Business One as a only data entry software, and that is also just invoicing, nothing other than the invoice. So basically, invoice they were doing, they are taking the print, they are sending it to the clients. But again, they are booking into the existing software called there was a accounting software. They were booking that invoices for the financial purpose. And for the exports kind of things, they were again using some Excel manual work and all those. Then we given them complete assurance and the guarantee that is the 90 days we will finish it and we will give it. So in October, we have taken it. We started October, November, and December. That is 18, 2018 December. We finished it complete. We train people. Partner has been implemented, but it is not trained. People are using it. People were using it that SAP and all those, but there was a no knowledge in detail how it will happen, what is the link in between the modules and the operations and all those. 1st January 2019, they started a full page SAP, and we given them a complete tightly hand holding. In 90 days, it was a completely operational, all three units successfully, and all the people were completely empowered on SAP. Now they are finalizing and closing the balance sheet from SAP, and now they are in the support, but they are completely on the ticket based support. So as and when some issue comes, they raise the ticket. So basically that kind of this is the one of the case. There is another few clients, there are the another few cases which were there. They started implementation with us. They we implemented, but in between, because of the COVID, so many things happened. So many companies are seeing very bad days, uh, where people decrease the employees. But being the SAP was there and online on the support which we were providing. So they were running a complete seamlessly their operations, very limited operations on system, and with the very limited resources. So automatically dependency goes very down, very minimal on the people. So these are the few things. There are the so many, but due to time constraint, we will just taken the hardly couple of the examples over here. So that's it, Charu. Sure. Sure, Sachin. So these two cases typically tell you how you can actually work with the partner to ensure that you are getting the maximum value out of your work. Right? There are a couple of questions here that I would like to answer. The first one is that how the data security is addressed within the support contract. Now, it is very important for you to engage that when you are signing the SOW, that point in time, the data protection clause is properly included. And any company which really wants to be in the market will not find it difficult to sign that particular contract with you. But it should be a part of scope of it should be part of the agreement that you are signing with them. It should be part Yes. of SOW or It the should it service should be a agreement. part of it should be a part of the SLA. SLA has includes the non-disclosement agreement by default, and where it clearly mentions that the client's data will not use for any other purpose, even for the
any kind of the marketing campaigns and all those. So there is the, yes, definitely in the part of in the SLA, this has to be there. Yes. So based on the support contracts comply with the relevant industry standards and regulations, they do. Particularly when you go and sign contracts with say companies into financial industry, which require a very high uptime and very high data security, everybody within the ecosystem has to follow the same guidelines. The partners also need to sign their document to ensure that their systems are properly protected from any kind of malware attack, so that then that does not relate into their access creating an issue for that. So that is one thing which is very important. That's what companies are doing currently. That is something which is definitely happening as of now. Any other questions for us? We are here to answer the questions. If there are no other questions, we take this opportunity to thank you for your time and joining us for this conversation. We intend to continue this series. There is a one question. Yeah. Just got Yes. over that the why there is the two usually AMCs comes in the case of SAP. One Okay. is specifically, see basically how it happens. There is the SLA AMC which SAP charge, that is on the licenses, which Yes. get completely SAP being the parent company. SAP is putting so many efforts on the new features into the product, and they are managing completely and maintaining the huge number of years experienced developers and the advisors. So whatever they are selling, the licenses, it is coming from SAP. So major it is, that is what they are taking the AMC on that yearly 17% to 21%, which covers only the upgrades, updates, and the product related things. And there is the one is another one is the end user service. That is usually partners like us provides the end user support, which signs. Yes. Yeah. Yes. Any other questions for us? Hello. Yeah, no other questions right now. So thank you everyone for taking out Thank your you. time and joining us for Thank this you, particular everyone. part. Thank you. Yeah. We'll continue this series throughout this month, and we look forward to your participation in the next part. If you have any queries, feel free to join us in the next conversation and would be very happy to answer them. Thank you. Thank you.